First of all, I'm really thankful to all the organizers and specifically Salman Maniyar sir for inviting me for this lecture. My lecture will be for a person who is doing a private practice and is a general practitioner. My topic will be very basic and it will really help you in your own dental practices, inshallah. Okay, so we'll be discussing the concepts which we have developed over a period of time. ये वो concepts हैं जो हम लोग को सिखा दिए गए हैं. But these are outdated concepts, these are wrong concepts. Ultimately they will make your practice bad. हमें नुकसान ज़्यादा होगा, टाइम भी वेस्ट ज़्यादा होगा और आउटकम बहुत हमें ख़राब मिलता है इससे. What we do is that we'll discuss these concepts and we'll be discussing the remedies or the true concepts one by one. It will ultimately help in your general practice as far as your root canal treatment is concerned. Okay. So before I like to start my presentation, I will show you a few photographs. It's a sort of quiz ताकि आप लोग उठ जाएं क्योंकि काफ़ी थक गए होंगे आप लोग. I'll be showing few photographs to you. इसमें से कुछ असली हैं, कुछ नकली हैं. हो सकता है दोनों असली हो, दोनों नकली हों. Just make up your mind कि कौन से असली हैं और कौन से नकली हैं. Sometimes it's really difficult to identify which is the real one and which is the fake one. Similarly, I'll be discussing these concepts one by one, which are outdated or wrong concepts, जो हम लोगों को बचपन से सिखाया गया कि इसको प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट करना है. बिकॉज हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो किसी सीनियर के साथ करते हैं. सीनियर ने हमें हाथ पकड़ के सिखा दिया, हमने आँख बंद करके यकीन कर लिया. बिकॉज आफ्टर BDS or after graduation, we will never open our books. हम ज़्यादातर टाइम रील्स पे तो गुजार देते हैं, लेकिन कभी भी शायद डेंटल की रील्स इतने गौर से ना देखें जितनी फालतू रील्स देखते हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट दी रील्स, बट you have to go and open your books or articles to have a sound knowledge of your dental treatment. Okay, it will ultimately help you during your root canal treatment. I'll be discussing these concepts one by one. Okay, so what do you think of it? आपको क्या लगता है कि ये short है या long है, क्या है? Anyone? Short है या long है? Up to the length है. अच्छा, मैं तो कहूँगा ये short है भाई. अब डॉक्टर साहब ने कैसे कह दिया, पुराना लेक्चर सुना हुआ होगा मेरा. ठीक है, देखने में short लगता है, but when you take out this tooth and see, it's nearly impossible. You are supposed to do this root canal treatment here. What you see on this radiograph is this thing. So what I used to say is that always verify your working length with your apex locator or verify your apex locator with your radiograph. दोनों को एक दूसरे से verify करें. Okay? So there are four important things. One is symmetroradial junction, what is minor foramen or apical constriction, what is major foramen or apical foramen, one is root tip. This is which you see on the radiograph. Okay, so always verify your working length with a good quality apex locator. Chamber opening in irreversible pulpitis to reduce the pain. ऐसे ही होता है, हमें बचपन से सिखाया गया है कि आज पेशेंट है, इसका चैम्बर खोल दो तो पेन खत्म हो जाएगा. समटाइम इट वर्क्स, समटाइम पेशेंट की कॉल आती है, डॉक्टर साहब जितना दर्द पहले था उससे ज़्यादा हो गया है. ओनली चैम्बर ओपनिंग विद डेंटल बर्ड्स यूजुअली प्रोमोट थर्मल इंजरी टू द ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड पल्प, which might result in severe post-operative pain. Okay, what will happen? अगर मैं आपको बोलूं कि एक आदमी को इन्फ्लेमेशन है और आप उस पर ये लगा दें तो क्या होगा? There will be more chances of increased pulp.
So if you have an inflamed pulp and you use these birds will act as a fire and they cause burn injury to the already inflamed pulp, which might result in increased post-operative pain. So we don't know the extent of the lesion, so it's better that you're supposed to remove the complete pulp to the apical constriction. Remove the whole pulp, or at least remove the pulp from the largest canal, or do a complete pulpotomy. Best is to remove the complete pulp in irreversible pulpitis. Okay, another concept, वो पेशेंट आता है कहता है थोड़ी सी फाइलिंग करके भेज दो, इनिशियल फाइलिंग. There is no concept of initial filing. After initial filing, if you are not able to remove the complete pulp, then the post-operative pain might shoot up. Don't touch the pulp or remove the pulp completely. The pulp was initially infected, now it is mechanically damaged by the file. या तो complete आप pulp निकालें once you have put the file inside the canal. वही एक देखें. Again, if you're putting these swords inside this inflamed area, what will happen? Pain बढ़ जाएगा. Similarly, if you're putting these files inside this canal and you're not able to remove the pulp, pain बढ़ सकता है. वो कहते हैं या तो छेड़ो नहीं या छोड़ो नहीं. Otherwise, it is just as कि आपने जख्मों पे उसके नमक छिड़क दिया. तो pulp, if you are putting the file inside the canal, then you are supposed to remove the complete pulp. Okay? Medication like cresophene, formocrosol soaked in cotton to release the pulp. हमारे मेंटोर थे डॉक्टर साकिब, अभी भी हैं, ही इज लिविंग इन कनाडा. वो कहते थे खुशबू के लिए हम रखते हैं इसको दांत के अंदर, एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट. Most of the study does not show any enhanced antibacterial activity or analgesic effects of these agents. They are as effective as sterile cotton. Complete removal of the pulp is important. Sometimes these medications work, sometimes they don't work. So best method is to remove the dental pulp. Don't trust these medications. Pulp पूरा निकालें. Tender tooth after obturation indicate endodontic failure. Kronfeld ने एक बताई बात हमें, कहते we have three type of periodontitis: infected, chemical and traumatic. The patient आपके पास आता है तो the patient was suffering from infected periodontitis caused by microorganism. During the dental procedure or just after the dental procedure, these sealer, these intracanal medications, these irrigant, these debris causes chemical periodontitis. And after that, if you are not able to do out of occlusion or you leave the restoration high, the patient will be suffering from traumatic periodontitis. Patient cannot differentiate between these periodontitis. उसको पहले भी टेंडर था, दांत चबाने में पेन था, बाद में भी पेन था. हम लोग क्या करते हैं? You see the seepage of the sealer. What we do that, हम कहते हैं हमने रूट कैनाल तो सही कर दी है, तो हम GPs निकालना शुरू कर दें. No, you're not supposed to remove GPs. You're supposed to give anti-inflammatory to the patient to reduce the inflammation, and that's all. And do out of occlusion. रूट कैनाल के बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी जरूर दें. A delaying permanent restoration for weeks after obturation in a symptomatic tooth. Patient आया रूट कैनाल की, उसके symptoms खत्म नहीं हो रहे, हम लोग क्या करते हैं? कैविट लगा के भेज देते हैं. Coronal seal is equally important, but I believe that coronal seal is more important than the apical seal. Permanent restoration or permanent crown. If your root canal is adequate, give a permanent restoration straight away, or permanent crown at least with temporary luting cement straight away. मुझसे को पूछता है आप कब देना चाहते हैं क्राउन, मैं कहता हूँ मेरा बस चले तो मैं उसी दिन दे दूँ क्राउन. You have to maintain the coronal seal. Or if you're still your root canal going failure, then you are supposed to go for the apicectomy or intentional implantation. Okay. Antibiotics in routine cases, sodium hypochlorite has enough. We usually use sodium hypochlorite. If you're using sodium hypochlorite, this is good enough. Don't give antibiotics जिस तरह हम लोग देते हैं. Once you remove the pulp, you have removed the pipeline which delivers the antibiotic to the tooth. Okay, so there is no use of giving antibiotic in routine dental cases. Temporary restoration with large cotton. Either no cotton you are supposed to use or minimum cotton
just to cover the canal orifice. Large cotton compromises the thickness of the materials required for for good coronal seal. For cavity, at least 4 to 5 millimeter thickness for 1 week. That's all. हम लोग क्या करते हैं, कैविट लगा के छोड़ देते हैं महीनों के लिए, तो दे विल बी लीकेज. Either a large cotton, if you're putting a large cotton with a small cavity, there will be coronal leakage. Either no cotton or very small cotton just to cover the small orifice with a large cavity, or go and straight away do a complete root canal with a permanent filling. Anodonic in vital tender tooth after tooth luxation injury and subluxation injury and concussion. 8 साल का बच्चा अक्सर आपको नजर आएगा भागता हुआ. They usually suffer these kind of injury. Transient apical periodontitis or sterile periodontitis, or the tooth is vital and the tooth is tender. 8 साल 9 साल का बच्चा है, ठीक है, and apex is open, tooth is immature. You find the tooth is tender, loss of lamina dura and pedial thickness. These are reversible changes. What we do is that we examine the patient and find the tooth is tender and we take out the pulp. Once you take out the pulp, we take out the odontoblast as well. Okay? Or odontoblast will become dead and the tooth will remain immature lifelong. So for God's sake, if the tooth is, if the patient is 8 years, 9 year old and you find a injury, patient is suffering from this type of injury, don't take out the pulp. बहुत कम इंडिकेशन है जिसमें आपने पल्प को निकालना नहीं है. उसमें एक इंडिकेशन ये है. फॉर एग्जाम्पल ये तो मेच्योर टूथ है ना, ये अगर इमेच्योर टूथ रहेगा तो ये इट विल रिमेन इमेच्योर टूथ वंस यू रिमूव द पल्प. ओके, सो द ट्रॉमा इज हियर, द इम्पैक्ट इज हियर, द टूथ बिकम टेंडर. Tender tooth does not always mean that there is a periapical infection. Okay? Leaving the tooth open. क्या दांत को खुला छोड़ना चाहिए root canal treatment? If you're performing a surgery in the body, what will you do after surgery? Suture करेंगे? Similarly, most of the time nothing is coming out from the tooth. Most of the time things are going inside the tooth. Patient जहाँ गया है ना खाने के लिए, वो आपको बता देगा उसने क्या क्या खाया है खाने में. एक हफ्ते में सारी चीजें दांत के अंदर जमा हो जाएंगी. सो microorganisms in the saliva are so resistant that your root canal will fail if you leave the tooth open. Never leave the tooth open unless you are not able to close it because of the excessive pus coming out from the chamber. अगर पस बहुत आ रही है तो वेट करें, थोड़ा सा पस रुक जाएगी तो उसको बंद कर दें. Try to close the tooth down. खोला नहीं छोड़ें उसको, ठीक है. टेम्पररी रेस्टोरेशन विद एक्सेसिव टाइम एंड लिमिटेड टाइम. पेशेंट आया, उसने कहा डॉक्टर साहब फर्स्ट विजिट हो गई है, मैं जा रहा हूँ 1 महीने के लिए शहर से बाहर, ठीक है. अब आप कहेंगे कैविट तो मैं लगा ही नहीं सकता 1 महीने के लिए, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस क्या क्या है? कैन नॉट डू सिंगल वेट रूट कैनल फॉर सम रीजंस, पेशेंट गोइंग फॉर वीक्स, कॉटन, कैविट एंड GIC. What you do is that you have to maintain a good coronal seal. You cannot do a single weight root canal for some reasons. What you do is that you put a small cotton, then a cavit, and then a good overlay of GIC. If you put GIC straight away, it will basically block the canals. तो 1 महीने बाद पेशेंट आएगा, when you take out the GIC, you take out cavit, you take out cotton, and you complete your root canal treatment with the obturation. Okay? Failure to do out of occlusion. Most of the time we do where हम इतना थक चुके होते हैं root canal के बाद that we are not able to do out of occlusion. The indication of out of occlusion, if you are performing a root canal treatment, is the tooth is non-vital, the tooth is tender, the patient was in pain. Yes, most of the time यही indications आती हैं. It's almost mandatory to do root canal, to do out of occlusion after root canal treatment. Okay? Otherwise हमारा patient क्या करता है, चबा चबा के चेक करता है बाद में कि डॉक्टर साहब रूट कैनाल सही हुई नहीं हुई है, तो बेसिकली वो प्रोमोट करता है ट्रॉमा को. तो ऑलवेज डू आउट ऑफ ऑक्लूजन. इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस वी आर गिविंग अ परमानेंट क्राउन टू द पेशेंट, तो आप आउट ऑफ ऑक्लूजन कर दें उसको. वेटिंग फॉर बोन रिजॉर्प्शन फॉर हीलिंग. तो पेशेंट आता है, कहता है आप देखते हैं यार रेडियोसेंसी है, मैं इसको ऑपरेट कब करूँ. दिस रेडियोसेंसी डेवलप आफ्टर फ्यू मंथ्स. दिस इज अ मिनरल लॉस and the mineral will be gained after your root canal treatment. It will take time. Once your soft tissue symptoms has gone, like sinus and swelling,
straight away go for the obturation and permanent restoration. Don't wait for the bone to heal. Bone healing होने में sometimes takes months and months. Okay, वहाँ mineral deposit होंगे आहिस्ता आहिस्ता. Okay, अगर आप बहुत अच्छे एंडोडोंटिस्ट हैं तो आपको ये लगता है कि आप पेन किलर नहीं देंगे, ऐसा नहीं है. There are two mechanism working. Hyperalgesia. Hyperalgesia is basically spontaneous pain. Increased pain perception, decreased pain threshold. अगर बॉडी में कहीं चोट लगी है तो आपको स्पॉन्टेनियस पेन भी होगा, परसेप्शन पेन का बढ़ जाएगा और बर्दाश्त भी कम होगा. सिमिलरली व्हेन योर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम टूथ पेन लाइक पल्पाइटिस, so we have two mechanisms working: peripheral hyperalgesia and central hyperalgesia. This will be covered with your root canal treatment, but this will be covered with your analgesic. अगर आपने पेशेंट को पेन किलर नहीं दी और पेशेंट को फिर भी पेन होता रहेगा अगर आपकी रूट कैनाल अच्छी हुई, तो ऑलवेज गिव अ गुड पेन किलर. पेशेंट को नहीं पता आपने रूट कैनाल कितनी अच्छी की है, पेशेंट को ये पता है कि पहले भी पेन था, बाद में भी पेन हो रहा है. तो ऑलवेज गिव गुड एनाल्जेसिक टू द पेशेंट. यूजिंग सेलाइन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसमें आपने डालना है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड ही डाल दें. कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालनी है. जैसे रूह अफ़ज़ा का रमज़ान से कोई ताल्लुक नहीं है ना, तो इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से. ठीक है, कुछ चीज़ें डेवलप कर ली हमने. रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सेलाइन, इफ यू यूजिंग सेलाइन, some studies says that your bacteria can survive weeks and even months in saline, and some studies show that they multiply in saline. So use hydrogen peroxide is not very important. It has visibility issue. Use sodium hypochlorite, easily available and cost effective. Use crown down technique. If you don't want to buy rotary, you can invest in hand protapers. You can use hand protapers, but do crown down technique. Don't go for the step back. ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, 2-4 दफ़ा करेंगे सीख जाएंगे. Multiple visit versus single visit. कभी सुना है ओपन हार्ट सर्जरी मल्टीपल विजिट में हो रही है कि थोड़ी सी ओपन, मैंने आज एंजियोप्लास्टी करवा ली, कल फिर बुलाया डॉक्टर ने, परसों को बुलाया है. नो, इफ यू ओपन इट the heart, you do multiple visits, reopen it, resuture it, there will be increased contamination chances और हो सकता है patient अल्लाह मियाँ के पास चले जाए. So if you're doing a single visit root canal, you know the coronal seal will be good, you know the anatomy, you know the instrument setup is easy, less time consuming and less painful. Sometimes you need multiple visits like retreatment or heavily infected, otherwise go for single visit root canal treatment. कुछ क्लिनिक्स में आपको 15 नंबर फाइल के अलावा मिलेगी नहीं 10 नंबर फाइल. नेवर यूज 15 नंबर फाइल एज अ इनिशियल फाइल. इट विल ब्लॉक द रूट कैनाल सिस्टम एंड मेक द सबसीक्वेंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट वेरी डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल. यूज 10 नंबर और लेसन नंबर फाइल एज अ इनिशियल फाइल. 10 नंबर फाइल इज गुड इनफ. के 10 नंबर फाइल. ये जो निडल्स होती है ना, ये रूट कैनाल के लिए नहीं बनाई गई, ये बनाई गई हैं. दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव. यू कैन यूज दिस. Irrigation is the most important thing in root canal treatment. Assuming, जैसे हम कभी assume कर लेते कुछ चीज़ें कि यार close होगी, but when you try, you will find extra canals. You will find Dr. Arshad presented a very good lecture. If you're using maxification, if you're using good illumination, you will find multiple extra canals as well. Most of the canal will be easily accessible completely by if the canal is wet with hypo. If you're using EDTA, I use Meta EDTA. If you're using 10 number file, 21 millimeter length K file, if you always locate the largest canal first and obturate the difficult canal first. Make it a rule. Use SX file instead of gauge Glidden. Easily available. Orientation from where to put the file is more important than the actual location. कहाँ से फाइल डालनी है? If you're locating this canal, you're supposed to put your file from here. ये canal locate करें तो फाइल यहाँ से जाएगी, ये canal locate करें तो फाइल यहाँ से जाएगी, ये canal locate करें तो सेंटर से जाएगी. फाइल कहाँ से जानी is more important than where is the location lies. Orientation of the file. In conclusion, summarize,
always try to remove the pulp to the apical constriction verified by apex locator and radiograph to release the patient's pain. Chamber opening in initial filing concepts in irreversible pulpitis reduce pain. It is not a good concept. Avoid this. Medication like cresofine cannot guarantee to relieve the pain. Use file number 10 or 8 K file as the initial file. Do not give antibiotic in routine cases. Give adequate coronal seal with adequate time and depth. Do out of occlusion after and during root canal treatment. Give analgesics during root canal and after root canal treatment. Do obturation after soft tissue swelling, symptoms and signs resolves. Don't wait for the bone to heal. Use sodium hypochlorite as an irrigant. Use a small cotton with large temporary restoration. Give permanent restoration as soon as possible after your endodontics. Remember, the tender tooth does not always mean that there is an endodontic failure. Avoid endo in subluxation and concussion injury. Do a crown down technique and avoid step back. Leaving the tooth open is not a good option. Always try to close the tooth. Give proper depth of the temporary restoration for minimum time. Remember that photo initially I saw? इसमें तो कौन सा असली है? ये this one. Okay, thank you very much. Any questions?